नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। So, in our previous video, we have discussed about techniques to study cell. So, it's a part of cell biology. So, in our previous video, we have discussed about different type of microscope, which basically use light and lenses to produce image. In this video, we'll discuss about a electron microscope. Okay, let's start with the history. So, in the year of 1932, Knoll and Ruska discovered electron microscope. So, basically, electron microscope uses electron and electromagnet instead of ordinary light and lenses. Okay, so in light microscope use light and lenses to produce an image, but in case of electron microscope, here electron beam is used, and this electron beam, when it strike with the specimen, then it will pass through the electromagnetic lenses, then it will produce an image. Okay, and the resolving power of this electron microscope is very is greater than that of a light microscope. One of the reason uh, for this is that the wavelength of an electron is very less as compared to light. Okay, so we know the formula of limit of resolution. So it's depending upon the wavelength. More the wavelength, limit of resolution is high. So if a microscope is having a high limit of resolution, that means he have a low resolution. If the limit of resolution value is less, okay, that means the resolution power of an microscope is high. So basically, it's inversely proportional to the value of limit of resolution. Okay, so in this formula, you will see whenever the wavelength is high, limit of resolution will be high. So obviously, the wavelength of visible light or UV light, any type of light, is far greater than the wavelength produced by the electron. The wavelength of an electron is very less as compared to light. Okay, that is why the limit of resolution of an electron microscope is very negligible as compared to light microscope. Okay, again, now the resolving power of an microscope is lower. Electron microscope में resolving power बहुत कम होता है. That's why its resolving power is high. Now, electron microscope, it is of two types. One is known as transmission electron microscope, TEM. Okay. Now let's first discuss about transmission electron microscope. So basically, transmission electron microscope is an microscope which is used to observe cells, which is very minute. Okay, minute, I mean to say that not only cell but cell structure like DNA or cell organelles, everything which can be observed through a light microscope. So लाइट माइक्रोस्कोप से जो चीज देख नहीं पाएंगे आप, उस उस चीज को आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो. बट इन दिस केस द स्पेसिमेन that you use to observe, it will be dead specimen. पहला बात तो dead होगा. Why it is dead? Because when you use a specimen to observe under TEM, it have to be processed. So processed होना पड़ेगा. It should be a process with heavy metals, and its slicing must be done. So after the processing, the specimen is ready to observe under transmission electron microscope. And another reason is that in transmission electron microscope, all the component like electron gun, anode ring, condenser lens, objective aperture lens, intermediate lens, projector lens, and fluorescent screen, all this component is inside a chamber, and this chamber uh, is vacuumated. Now here air particle is not there. Okay, the reason is
one of the important reason is that if air particle is present inside the microscope, then it will disturb the path of an electron. That's why to avoid this, vacuum is maintained inside this microscope. That is why this is one of the reason why the specimen is dead. So in a vacuum condition, no living organism or living sample will can be survive. Okay. Now this is a image of an electron microscope. We'll discuss each and every parts and its function and principle. Okay. Now transmission electron microscope, it have a electron gun, and inside this electron gun there will be a fine filament. Okay. Now whenever this fine filament get heated, then it will produce a beam of इलेक्ट्रॉन. ओके. सो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पर एक फिलामेंट रहेगा और ये फिलामेंट गर्म होता है. whenever you switch on the TEM, you make ready. जब भी आप रेडी करोगे माइक्रोस्कोप को, तो इलेक्ट्रॉन गन का फिलामेंट गर्म होगा और इसी से इलेक्ट्रॉन बीम निकल के आता है. below it there will be a cathode ray tube from where the electron are emitted and accelerated in a vacuum tube. Okay. So here cathode ray tube is there. Now cathode ray tube, what it does, it accelerate the electron beam in a vacuum tube. So vacuum tube के अंदर में इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीड से निकालता है. Okay. The main work of cathode ray tube is this. Okay. Just below cathode ray tube, there will be a condenser coil. Okay. Now this condenser coil, what it does, the condenser coil will gather the electron that come from the above, from this anode ring, which concentric the electron beam to a particular path. The function of condenser lens is to make this electron beam to focus in a specimen. So जितना electron beam आता है, कंडेंसर लेंस का मेन काम ही यही है कि इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन की तरफ में फोकस करना, और ये इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन से आर पार होता है. देन देन इट विल गो इनसाइड ए ऑब्जेक्टिव एपरेचर लेंस. तो बेसिकली ये जो लेंस कहा गया है, इट्स नॉट ए ग्लास लेंस, इट्स एक्चुअली ए मैग्नेटिक coil. Okay. And this magnetic coil will form an image. Okay. It will form an image which will pass through this intermediate lens, and it will reaches the projector lens. Now this projector lens is like a ocular lens of an light microscope. So we know that ocular lens have its own magnification like 2x or sometime 50x. Okay. No, no, 5x and 20x. Okay, sorry. 5x and 20x magnification is there. Similarly, like that, projected lens of an transmission electron microscope have its own magnification. Okay, and it is also made up of magnetic coil. So what it does, it will again magnify the image which was produced by the objective lens, and as a result, a larger image will be formed in this fluorescent screen. Okay, which will be detected and it will produce an image in a computer. In this way you can see a very fine specimen detail in a computer, and its magnification is very high. 5 lakhs times it can magnify an object. So it's very big magnification value, and the limit of resolution is very negligible. So here 3 Armstrong has been written, but sometime you can see 2 Armstrong resolution also, very negligible. When we compare the limit of resolution of light microscope and electron microscope, then there is a very huge difference. You can't even imagine. Okay. आप लाइट माइक्रोस्कोप में आप 400 गुना, वैसे तो आपके सिंपल लेबोरेटरी में 100x मैग्निफिकेशन रहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो हम यूज करते हैं, बाई स्टूडेंट जो यूज करते हैं. बट
आप सोच लीजिए एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो कि 5 lakhs टाइम एक सैंपल को मैग्नीफाई कर पाए। ओके, सो ये कितना पावरफुल होगा। एंड इन दिस microscope you can't use living object because it have to be undergo processing, and there is a vacuum condition in that inside this tube. Okay, the next microscope is scanning electron microscope. Now again, this is also an electron microscope. So what happened in this microscope? So basically, uh, scanning electron microscope is used to prepare an image of an surface of an object. So imagine in a transmission electron microscope, you will get the 2D image. दो माने 2D इमेज जो आप किताब में एक फोटो देख रहे हो या ये स्लाइड में जो आप इमेज देख रहे हो ये 2D इमेज है। ओके, बट समटाइम इन ए वीडियो आप क्या देखते हो कि ओरिजिनल आप अपने नेकेड आई से जो आप अपना मोबाइल देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, इट हैव ए लेंथ, इट हैव ए ब्रेथ, इट हैव ए हाइट, उसका 3 डायमेंशनल इमेज होता है। ओके, आपके आंखों में वो 3 डायमेंशनल इमेज दिखने को मिलता है। सेम चीज आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी सैंपल का पूरा सरफेस का टोपोग्राफी को इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। अगर सरफेस में अप्स एंड डाउन, डीप एंड शैलो सरफेस है, तो ये सारा का सारा डिटेल आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। इसका दूसरा एक एडवांटेज क्या है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप लिविंग सैंपल का इमेज निकाल सकते हो। तीसरा, लिविंग सैंपल, और आप सैंपल को प्रोसेस करना नहीं पड़ता, आप होल सैंपल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है मैं बता दूं। एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ एन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज फ्रॉम 20x to 20,000x। ये भी बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन है। ओके, एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज, ये है इमेज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन गन दिखने को मिलेगा। नाउ इनसाइड दिस इलेक्ट्रॉन गन विल बी ए फिलामेंट व्हिच विल हीट एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, जो कि एक्सीलरेट होगा, और यहाँ पर भी आपको एनोड रिंग दिखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस व्हाट इट डज, द एनोड रिंग विल मेक द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम जो कि डिफ्लेक्टेड हो सकता है, बाहर जा सकता है, उसे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रास्ते में इसको डायरेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है, ये डिफ्लेक्टेड नहीं होता, एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है, एंड इट विल गो टुवर्ड कंडेंसर। अभी कंडेंसर क्या करेगा, ये कंडेंसर ये स्पेसिमेन के जगह में इसको फोकस करेगा। बट स्पेसिमेन से पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इट्स अगेन ए मैग्नेटिक कॉइल। बट एक चीज याद रखिए दोस्तों, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का जो काम था, वो काम था आपका टू प्रिपेयर एन इमेज। ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव मैग्नेटिक कॉइल इमेज प्रोड्यूस करता था, बट इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है टू फोकस द electron beam that came from the condenser toward the sample। ठीक है, इसका मेन काम वही है कि इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करना है। तो बेसिकली जब भी ये फोकस करता है आपके सैंपल की तरफ, तो सैंपल में ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, और हमें पता है कि कोई भी सैंपल में आपका एटम रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव सेंट्रल प्रोटॉन और बाहर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब भी बाहर से हाई एनर्जी आता है, then the electron from the outer orbit it will excited and sometime it will come out, and this electron that come out when it gain a huge amount of energy, and this electron is known as secondary electron। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जब भी a beam of electron strike the surface of an sample, then an electron from the atom of an sample it will come out,
and this electron will be detected by the secondary electron detector. And by detecting this secondary electron detector, by detecting the secondary electron, a image will form. Okay, an image will form where a topography of an sample will be clearly visible. क्योंकि बेसिकली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आपका ये जो मेन इलेक्ट्रॉन बीम है ये नहीं होता, आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आपके सैंपल का ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसी की वजह से सैंपल का इतना डिटेल आपको इन द फॉर्म ऑफ इमेज दिखने को मिलता है। ओके, ठीक है। सो दिस इज ए मेन characteristics of scanning electron microscope, where the electron of an electron beam that come from the electron gun is not used. Actually, a secondary electron is used. Okay, so basically image is formed because of a secondary electron. ये बहुत important है और एग्जाम में आता है. Okay, now let's discuss about confocal microscopy. Okay. Now, confocal microscopy, first it was discovered by Marvin Minsky in the year of 1955. Now, what is the use of this confocal microscope? The main use of confocal microscope and the advantage of this confocal microscope, that a shallow depth of a field, it have a shallow depth of a field. That means अगर आपका एक स्पेसिमेन है, मैं एक स्पेसिमेन बना रहा हूँ, ठीक है, ये आप पकड़ लो, ये स्पेसिमेन का वर्टिकल व्यू है, ठीक है, ये स्पेसिमेन का पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये इस तरह से जाता है। हाँ, ये ऊपर वाली लेयर में पकड़ लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके नीचे की तरफ में पकड़ लीजिए वैक्यूल है, पकड़ लीजिए, इसके नीचे की तरफ है आपका, पकड़ लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके नीचे में आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब भी आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हो, देन यू विल सी द होल इमेज, एक पूरा इमेज देखते हो, ठीक है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया या सब कुछ, मतलब सेल, सब सब सेल का सब पार्ट दिखेगा, एज ए होल यू विल सी होल सेल। ओके, but in case of confocal microscope, here electron beam is not used. ये चीज याद रखिए दोस्तों, लाइट यूज हो रहा है। So the importance of confocal microscopy that it have a shallow depth of a field. ये अगर एक पर्टिकुलर लेयर को देखना चाहे तो ये इसको ही देखेगा, इसको इसका इमेज बनाएगा, इसका इमेज बनाएगा और बाकी को ब्लर कर देगा, ठीक है। That is why it is known as a shallow depth of a field. It will elimination of out of focus glare. अगर फोकस उसका यहाँ पर है तो ये इसी को फोकस करेगा, और आउट ऑफ फोकस जितना भी है उसे ब्लर कर देगा, ठीक है। एबिलिटी टू कलेक्ट सीरियल ऑप्टिकल सेक्शन, अगर आपको ये सेक्शन का इमेज निकालना है, यू हैव टू एडजस्ट द फोकस, यू विल गेट द इमेज ऑफ दिस सेक्शन। इसको निकालना है, यू हैव टू एडजस्ट द फोकस, यू विल गेट दिस सेक्शन। इसी प्रकार से आपको डिफरेंट सेक्शन मिलेगा, और ये डिफरेंट सेक्शन का सब इमेज को आप जब मिला दोगे, तब आपको एक 3D इमेज बनते हुए दिखेगा, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ एप्लीकेशन। तो 3D इमेज बनेगा बिकॉज ऑफ इट्स सीरियल ऑप्टिकल सेक्शन प्रॉपर्टी। ओके, नाउ मेजर एप्लीकेशन क्या क्या है, यहाँ पर आप सेल को जिंदा भी देख सकते हो, या इसे मार के भी देख सकते हो। मारना मतलब कि इसको स्टेनिंग कर सकते हो, ठीक है, स्टेनिंग करके देख सकते हो। और यहाँ पर बिना स्टेनिंग करते हुए भी देख सकते हो, बिकॉज ये अपने सराउंडिंग को, जिसको फोकस किया उसको दिखाएगा, बाकी को ब्लर दिखाता है, तो उसके वजह से ये कंपोनेंट को दिखने में ज्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसे स्टेनिंग करते हो तो फ्लोरेसेंट प्रोब यूज कर सकते हो, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल रख सकते हो जो कि फ्लोरेसेंट लाइट एमिट करेगा, लिविंग स्पेसिमेन यूज कर सकते हो, और यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स, मतलब फ्लोरेसेंट लेवल्स यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं एक बार इमेज आप सभी को दिखा देता हूँ। सो देयर विल बी अ लेजर फ्रॉम वेयर a light will come out, और लाइट
जब निकलता है, एक चीज याद रखिए, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में दो पिन होल रहते हैं, ठीक है। नाउ दिस पिन होल व्हाट इट डज, इट विल एलिमिनेट आउट ऑफ फोकस ग्लेयर, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर फोकस का लाइट चाहिए, इट विल डू दैट, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर फोकस का लाइट इट विल emit, it will pass it will reach the objective lens, it will from the objective lens it will strike the specimen just below the objective lens, ये specimen में लग के ये objective lens को पास करेगा, इमेज बनाएगा, इमेज बनाकर ये फिर से यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर है, ठीक है। देखिए, लेजर आएगा, ये पिन होल से लाइट पास होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ये स्पेसिमेन में टकराएगा, स्पेसिमेन में टकराने के बाद ये जो स्पेसिमेन में टकरा के लाइट आता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाता है और ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बना देगा, ये इमेज और लाइट आप जो भी कहो, ये स्ट्राइक होगा बीम स्प्लिटर में। तो ये बीम स्प्लिटर का काम यही है कि ये लाइट को फिर से पीछे की तरफ नहीं भेजता, ये इसको डायरेक्ट करता है टुवर्ड द डिटेक्टर। तो ये डिटेक्टर के जगह जाते वक्त यहाँ पर और एक पिन होल होता है जो कि एलिमिनेट करता है आउट ऑफ फोकस ग्लेयर को, ठीक है। सिर्फ फोकस जो इमेज है उसी को पास होने देता है और बाकी सब ब्लर हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ फंक्शन ऑफ confocal microscope. So this is an table where you will see different types of a microscope and the inventor and in which year it was discovered, from 1558 to 1935, where a scanning electron microscope was discovered. Okay, so this is very important chart. You must read and remember all the scientists name and in which year and what microscope was discovered, because in competitive exam this type of question is coming very frequently. Okay, अगर ये चीज इतना इम्पोर्टेंट ना भी हो, यू मस्ट नो, एग्जाम तक तो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो हमारे नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं एकदम जल्दी से देने के लिए ट्राई करूँगा। आप ये वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स बनाइए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देता हूँ ये टॉपिक से रिलेटेड। मिलते हैं और एक नए वीडियो में।